b1 by a1 into x plus c1 by a1 is equal to 0, and x square b2 by a2 into x c2 by a2 is equal to 0. Subtract both the terms, right? Minus 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 cancel out, you'll get the value of x, and जो मैंने first equation पे निकाले हैं is equals to c2 by a1, right? So ये भी एक तरीका होता है जिससे exactly what you are getting is you are getting here only. ये दोनों में ही एक ही चीज आएगी, but you can do this, right? Carefully you'll get that, right? So दोनों तरीके हैं आपको इक्वेशन सॉल्व करने के एंड कॉमन रूट्स के कंडीशन निकालने के, लेकिन both the roots are common, both the roots are common के लिए कंडीशन क्या होता है? ये है वन रूट कॉमन के लिए ना, ये हितांशु, आर यू फ्रॉम सीबीएसई और आईसीएसई और स्टेट बोर्ड? विच बोर्ड यू आर? अगर ख्याल हो तो ये क्रैमर्स रूल से हम लोगों ने स्टडी किया था, राइट? जिसमें a1 b1 c1 को सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका होता है जस्ट सॉल्विंग द इक्वेशन। एक्स स्क्वायर ये हमने पहले लिख दिया ना, इसे भूल गए, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये लिखा पहले एक्स स्क्वायर के नीचे, राइट? वो होने के बाद फिर मैं x पर आ गया तो x लिखा, इस समय ये इधर से मल्टीप्लाई हुआ माइनस इधर से मल्टीप्लाई हुआ, a2 c1 माइनस a1 c2, राइट? ये दोनों जब काम हो गया तो थर्ड वाले पे मैं आया जिसमें c1 c2 को हटा के 1 लिख दिया, फिर से ऊपर से नीचे गया a1 a2 माइनस 10, राइट? सो ये वन रूट कॉमन लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने यहाँ पर ही खत्म किया था, राइट? तो वहां से हमने इसे लिखा एक्स स्क्वायर अपॉन दिस, एक्स अपॉन दिस, 1 अपॉन दिस। यस, टाइम से ज्वाइन करो बेटा, सब कुछ समझ में आएगा, लेट ज्वाइनिंग के कारण ये गड़बड़ होती है। एक्स स्क्वायर अपॉन दिस, एक्स अपॉन दिस, 1 अपॉन दिस, राइट? सो ये एक्स की वैल्यू पहले मैं निकाला तो मेरे पास x इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस आ गया, सेकंड वाले में इन दोनों से निकाला तो x की वैल्यू आ गई, दोनों को रखने पर ये यू आर गेटिंग, राइट? तो ये दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आए हैं, दिस इज कॉल्ड कंडीशन फॉर वन रियल रूट इज कॉमन, राइट? एक रियल रूट कॉमन होने का ये कंडीशन होता है, राइट? इन दोनों में वन रियल रूट कंडीशन का। लेकिन मैंने क्या कहा कि इससे बेटर तरीका आपको क्या रहेगा कि फर्स्ट इक्वेशन को आपने a1 से डिवाइड किया, सेकंड इक्वेशन को a2 से डिवाइड किया, दोनों को आपने माइनस कर दिया, देन यू आर गेटिंग x की वैल्यू डायरेक्टली आपके पास आ जाएगी। वन रूट कॉमन के लिए ये भी एक बहुत प्यारा तरीका होगा, क्वेश्चन करके दिखाऊंगा तो और अच्छे से आपको ये बात समझ में आएगी कि एग्जैक्टली क्वेश्चन के थ्रू कि क्या हो रहा है और कैसे इक्वेशन फ्रेम हो रहे हैं और सॉल्व कैसे होगा, राइट? वन रूट इज कॉमन, राइट? वन रूट इज कॉमन के लिए, ओके? सो दिखाता हूं अभी, यस ऋषि अभी दिखाता हूं बेटा। वन रूट इज कॉमन, राइट? एक रूट अगर कॉमन है तो क्या किया जाए कि दोनों में एक रूट कॉमन अपना कंडीशन दे देगा और बड़े आराम से यू विल बी एबल टू फाइंड द वैल्यू, राइट? कैसे वैल्यूज को निकाला जा सकता है, ओके? सो जस्ट ट्राइंग, एक दो क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। Write down everyone. Three x square plus 4kx plus 2 is equal to 0 and 2x square plus 3x minus 2 is equal to 0 have a common root. Find value of k.
या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो ऊपर लिखा हुआ है, या आप सॉल्व कर सकते हैं। दोनों आपके पास कंडीशन है, दोनों तरीके से वर्किंग हो सकती है। सो जस्ट ये भी आप देख लें जो रिटन है, राइट, टेक योर टाइम। Then you have to find value of k. One root is common. C2A2 minus C1A1. This is B1 C2 minus B2 C1, A2 C1 minus A1 C2, A1 B2 minus A2 B1. Okay. And in this, but क्यों फॉर्मूला के पीछे पड़ रहे हो? ध्यान से देखो, हो सकता है जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बड़े आराम से निकल जाएगा। ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूं। इसे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट इक्वेशन को, 6x स्क्वायर प्लस 8kx प्लस 4। सेकेंड को 3 से मल्टीप्लाई किया, राइट, दोनों को माइनस कर दिया, कैंसल आउट। सो वी आर गेटिंग 8k minus 9x is equals to minus of 10,
और x इज इक्वल टू -10 अपॉन 8k minus 9. Okay, 8k minus 9. This is the value of x and this x must satisfy दोनों जो इक्वेशन गिवन है उनमें से जिसमें भी आप रखना चाहो. This was 3x square plus 4kx plus 2 is equal to 0. Right? You can put the value of 3 into 10 square 100, 8k minus 9 the whole square, 40 with minus sign into k upon 8k minus 9 plus 2 is equal to 0. Now you have to solve for k, right? So that's the reason I'm saying कि if you don't remember the formula now, don't worry, बड़े आराम से questions हो जाएंगे common roots के, not required the formula one. Right? कैसे माइनस करके वैल्यूज को पुट करना है यहाँ गिवन. राइट, के की 2 वैल्यूज आएगी यहां से. राइट, सो ये एक तरीका हुआ जहां से आप ये पूरी वर्किंग कर सकते हो, लेकिन ध्यान से देखना. राइट, कैसे होता है. अब ये जो इक्वेशन 2 गिवन थे आपके पास, वेरी गुड, सही आंसर सुमित, वेरी गुड बेटा. देखो, लेकिन जब इक्वेशन की हम लोग बात कर रहे हैं तो कैसे सॉल्व होता है उसे ध्यान से देखना. राइट, ये 2 इक्वेशन आपके पास गिवन है. राइट, बोल रहा है इसके कॉमन रूट्स हैं. ध्यान से अगर देखो तो सेकंड इक्वेशन जो आपके पास गिवन है उसमें कोई k की वैल्यू नहीं है. फर्स्ट इक्वेशन है जिसमें केवल k. सेकंड इक्वेशन को अगर ध्यान से मैं देखूं, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x कॉमन आउट, x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन आउट, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. इधर x इज इक्वल टू हाफ और माइनस 2, 2 वैल्यूज आ गए. राइट, सो अगर x इज इक्वल टू हाफ जो है वो कॉमन रूट रहा होगा, सो यू आर गेटिंग 3/4 प्लस 8k प्लस 2 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट. एंड अगर माइनस 2 रहा होगा, सो दिस इज गेटिंग माइनस 8k plus 2 is equal to 0 is the second one, right? 11, so k is equal to minus 11/16, 32 आ रहा है. This is 8 plus 3, 11/8 is equal to minus 8k, k is equal to minus 11/32, and यहाँ पर k is equal to minus 14/8, 7/4, something like this. This is the plus sign. Right, okay, यहाँ half था तो this will be 2 only. Right, and this is coming as plus 2, 8 plus 3, 11/4 only. Right, this is 11/4 with minus sign, and second value जो आपके पास आ रही है उसके अलावा into 2 था, तो this is coming minus 11/8 and second value is coming as 7/4. तो 2 आंसर आपके पास आने चाहिए. एक है minus 11/8 का आंसर और दूसरा आंसर जो आ रहा है that is minus 11/8. तो how many of you are getting answer right?
Are done yes in chat, please. Okay, everyone. Very good, very good, very good, everyone. Very good. No problem. Next, x square minus 5x plus 6 is equal to 0. And x square minus ax plus 3 is equal to 0. If one root is common, find possible values of a. Okay, do it fast. Very good. Very good. Done, everyone. डोंट थिंक मच, आंसर इज करेक्ट. जो दोनों लिखा हुआ है वो वहां के कैलकुलेशन पे मत जाओ, डायरेक्टली मैंने आंसर लिखा हुआ है. डोंट थिंक मच ना, इस पे आ जाओ. x इज इक्वल टू 2 एंड 3, दो वैल्यूज आ गए आपके पास. 2 आपने रखा तो ये आ गया 4 माइनस 2a प्लस 3 इज इक्वल टू 0. a इज इक्वल टू 7/2, एक आंसर आ रहा होगा आपके पास. एंड 3 जब आपने रखा तो 9 प्लस 3 12, a इज इक्वल टू 12/3. राइट, 4 आ रहा होगा. तो दो वैल्यूज आपके पास आ चुकी है, 4 एंड 7/2. हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग 4 एंड 7/2? राइट डाउन यस इन चैट फास्ट. Very good, yaar. Very good. Very good. Very good. Hitansu, if you want to ask anything, please you can write in chat. Okay. So one more this time. Hope everyone is getting this correct. 3x square minus 2x plus p is equal to 0. And 6x square minus 17x plus 12 is equal to 0.
find p. p की वैल्यू फाइंड करे if one root is common. Do it fast. Do it fast, do it fast. Write down the answer. Not in X, Neha, not in X. X की तो वैल्यू आएगी Very good, Sumit. Very good. See the second one. Second equation आप देख के ही आपको दिख रहा है कि like this you can factorize into a 6x square 9x minus 8x plus 12 is equal to 0. This is 3x 2x minus 3 minus 4. 2x minus 3 is equal to 0. So x is equal to either 4 by 3 or 3 by 2. Now, two values of x are there. Maybe one value 4 by 3. So 3 into 16 by 9 minus 8 by 3 plus p is equal to 0. 16 minus 8, p is equal to minus of 8 by 3. Similarly, when we'll put the value of this, so second value you are getting minus 15 by 4. So how many of you are getting this value? Write down yes in chat.
So one root is common, right? One root is common. What to do and how to solve the question. Hope you all are understanding this. Very good, very good. बहुत सारे लोगों का है. Yes, Rishi, your message is reaching there. सबके मैसेज पहुंच रहे हैं. Okay, so let's do one more. थोड़े से क्वेश्चन को एक राउंड आगे बढ़ाता हूँ. अब एक स्टेप आगे बढ़ने में मेरे को नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी अब, क्योंकि वन रूट कॉमन में अगर रूट्स आर कमिंग तो यू नो हाउ टू सॉल्व दिस. नाउ द क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 and x square plus cx plus b is equal to 0, right? A common root. Prove that or find the equation that contain uncommon root. Both the equation have one common root, means one uncommon root. So you have to form the equation whose one root is uncommon, right? With the help of uncommon root, you have to form the equation. Maximum 3 minutes. Both the equation having one root common. Find equation with uncommon roots. मीन्स क्या मतलब है? मान लेते हैं अल्फा, फर्स्ट जो इक्वेशन गिवन है उसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा.
सेकेंड का अल्फा एंड गामा. So you have to form the equation whose roots are beta and gamma. Hope everyone is understanding this. Very good, Sumit. Very good, beta. Doing very good. Very good. Very good. गड़बड़ कर रहा है, देखना ध्यान से. See, one root is common, right? एकदम बेसिक से जाओ, एकदम बेसिक से जाओ. This is very basic questions. Alpha will satisfy this.
अल्फा विल सेटिस्फाई द सेकंड वन। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया मैंने, राइट, b माइनस सी इंटू अल्फा प्लस c माइनस b, और दिस विल बी b माइनस c। तो अल्फा इज इक्वल टू 1, राइट। अल्फा की वैल्यू 1 है, अल्फा बीटा इसका रूट था, अल्फा गामा इसका रूट था। फर्स्ट के लिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू c बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू b बाई ए। अल्फा की वैल्यू 1 ली तो बीटा इज इक्वल टू c हो गया, गामा इज इक्वल टू b हो गया, राइट। सो दोनों रूट्स मेरे पास आ गए। और अच्छी बात क्या है, 1 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अगर मैंने 1 रख दिया दोनों में से किसी इक्वेशन में, 1 प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आ गई, मतलब b प्लस सी की वैल्यू भी -1। वेरी गुड, राइट। एंड वी नो दैट इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस गामा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस गामा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, राइट। गामा बीटा की वैल्यूज है मेरे पास b प्लस सी इंटू एक्स इंटू बी सी, but b plus c is -1, so x square plus x plus bc is equal to 0। ये अगर आप इक्वेशन लिखते तो अच्छा लगता। Hope everyone is getting this. Note down please. Very good. Om, is it okay? आई बात समझ में? सुमित, ये ए कहां से आ गया तेरा? कोई दूसरा क्वेश्चन से रिलेट किया? सुके ना? ये वन रूट कॉमन की बात चल रही है, राइट। एक रूट कॉमन पर बहुत अलग अलग कंडीशंस हो सकते हैं एंड वर्किंग हो सकती है। थोड़े से केयरफुल होके काम करो, राइट। बट डोंट, मतलब फॉर्मूला मैंने बताया, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला के लिए तो गो फॉर द फॉर्मूला, राइट। वैसे आप चाहो तो यूज कर सकते हो, अगर याद हो रहा है फॉर्मूला और उसमें रख पा रहे हो तो नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं। फर्स्ट इक्वेशन, राइट, दोनों इक्वेशन आपको गिवन, राइट, हैव एग्जैक्टली वन रूट कॉमन, वन रूट कॉमन, फाइंड k, right, find value of
How many of you got the right answer? K is equal to half. Misab, very good. Bhavna, Sumit, Om, very good. Aditi, very good, very good, very good. Upesh, very good. यार आना ही चाहिए आंसर, राइट? तो आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस. तो थोड़ा आगे बढ़ सकता हूँ, राइट? ये पूरी कहानी हुई वन रूट कॉमन की. लेकिन यहीं पर अगर मैं ये बोलूं टू रूट्स आर कॉमन, राइट? टू रूट्स आर कॉमन, राइट? दोनों रूट्स अगर कॉमन होंगे तो क्या करना है, राइट? a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equal to c1 by c2, right? Both the roots are common. अगर दोनों रूट्स कॉमन हो रहे हैं तब के लिए ये कंडीशन है a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. Is it okay? राइट? लेकिन ये ख्याल रखना कि दोनों रूट्स कॉमन होने के लिए कभी तो आपको सीधा का सीधा इक्वेशन दे देगा, लाइक 2x square plus 3x plus 4 is equal to 0, and ax square plus bx plus 2 is equal to 0. Find ratio of a and b if both the roots are common. a and b की रेशियो मुझे चाहिए, और a b की वैल्यूज मिल जाए तब भी चलेगा. वेरी गुड, बहुत अच्छे, राइट? a by 2 is equal to b by 3 is equal to 4 by 2, right? This will be 2, a is equal to 4, b is equal to 6.
Very good. This is 2 by 4, right? We have to maintain this, the order. So this is 2 by 4, and this will be 2 to A is equal to 1, B is equal to 3 by 2. The ratio of A is to B is 2 is to 3. Hope everyone is getting this. कितने लोगों का सही आया? Write down yes in chat, please. Two roots are common. Okay, not bad. Very good. Condition for rational roots. रैशनल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होगा? फॉर एनी इक्वेशन ax² + bx + c is equal to 0, if a, b, c belongs to a rational number denoted by q and b is a perfect square, then roots will be rational, right? Roots will be rational. Right? Same way real roots के लिए we know this, right? ax² + bx + c is equal to 0. A, B, C belongs to real number and D is non-negative, right? Non-negative, so roots are real, right? वो भी काम कर जाएगा, roots real भी हो जाएंगे, right? ना अब जो रूट्स हम लोगों ने काम किया उसको साथ में हम लोग यूज करते हैं. रिलेशन between the roots and the coefficients. Relation between the roots and the coefficient. Very important topic. Right? कैसे रहेंगे questions? Right? In the equation ax² + bx + c is equal to 0, if one root is alpha, other is 1 by alpha, or it is given roots are reciprocal to each other, right? अगर reciprocal होंगे एक दूसरे के तब क्या कंडीशन होगा? Try this, then we'll do
डन। डी इज नॉन नेगेटिव, सेकेंड वन में, फर्स्ट में डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट, डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर इस वाले में, और सेकेंड वाले में डी इज नॉन नेगेटिव, या तो जीरो होगा या ग्रेटर देन जीरो होगा, राइट। एंड थर्ड कंडीशन से हमने रिलेशन शुरू किया। ओके, तो कैसे रिलेशन निकालना है वो दिख गया होगा, सी इज इक्वल टू ए आ गया, रेसिप्रोकल टू ईच अदर। नाउ अब आपकी बारी है, ध्यान से आप लोगों को क्वेश्चंस करने हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ देने जा रहा हूँ। सेकंड इज वन रूट इज अल्फा, अदर रूट इज माइनस अल्फा। थर्ड इज वन रूट इज अल्फा, अदर इज टू अल्फा। बस दो क्वेश्चन, और आगे भी है बट केवल दो क्वेश्चन पहले करें फिर आगे देता हूं। आराम से ना, खुद से कोशिश करो, फिर मैं बताता हूं। कंडीशन ऑन ए बी सी, द कोफिशिएंट्स।
You have not to find value of अल्फा. अल्फा नहीं निकालने हैं. हमें करना क्या है कि कुछ हमारी इक्वेशन जो है ना, उसमें हम लोगों को अल्फा को एलिमिनेट करना है. राइट, अल्फा को एलिमिनेट करना है. अगर अल्फा एलिमिनेट हो जाता है तो दस वेरी गुड, आंसर आना आसान हो जाएगा. यू हैव टू एलिमिनेट अल्फा. राइट, सो अल्फा आपका जो आ गया उससे अब एलिमिनेट करने की कोशिश करो आप. अगर अल्फा को एलिमिनेट हम लोग कर पाते हैं मींस वी आर गेटिंग दिस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट करें. See, for the first one, one root is alpha, other root is minus alpha, right? So we know this case, sum of the root will be 0, alpha plus minus alpha will be 0, and minus b by a is 0, so b is equal to 0 is the first one. Right? This is the first one, right? And second one, alpha and 2 alpha. So alpha plus 2 alpha is minus b by a, and 2 alpha square is equal to c by a, right? 3 alpha is equal to minus b by a, alpha square is equal to c by 2a, right? Put the value of alpha equal to minus b by 3a. So put the value. This is square upon 9a by 2a. So 2b square is equal to 9ac. B square is equal to 9ac. Hope screen is visible to all. Right? You can see this, both the equations. Getting everyone? So this is the second condition. One root is alpha, second root is 2 alpha, right? We are going for the third one. So everyone careful. If you want to generalize the condition, in this case, one root is alpha and other is 2 alpha. In place of 2, it may be 3 alpha, 4 alpha, and so on. So like the fourth condition I am giving you, one root is alpha and second root is n alpha. N alpha means this is a generalized case of n alpha. In this case, maybe n is equal to 3 by 2, 2 by 3, n is equal to maybe like 2 alpha, right? Maybe
any rational number 3/4, right? Any ratio is given, right? So बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ में possible हो सकते हैं if you are able to do that, right? Fourth and fifth, two question I am giving you, and second is one root is alpha, second root is alpha square, right? Alpha and alpha square and alpha and an alpha. For these two, you have to find conditions, right? Okay, we are live on YouTube. You can also go in YouTube. I guess you can see this video, right? If you are not able to just catch up the thing or just you are not getting the things, you can go there also, right? We are live on YouTube. Go in YouTube, just go there and see this. Are you able to see that in live videos? The same alpha and alpha. Okay, we are live on YouTube. You can also go in YouTube. I guess you can see this. So now should I start? मैं start करूं? Okay, okay. Take your time. 2 more minutes for you, and you have to remember these forms, right?
Okay, let's start. Alpha and alpha square, right? Sum of the root minus b by a, product of the root is c by a. Alpha 1 plus n is equal to minus b by a, and alpha square is equal to c by a, right? Put value of alpha or square this, we are getting 1 plus n the whole square, b square by a square, and alpha square is equal to c by a. Alpha square, put value of alpha square there. Alpha square is nothing but c by n a into 1 plus n the whole square is equal to b square by a square. A cancel out. We are getting nb square is equals to n plus 1 the whole square ac. Right? This is the condition. Hope you all are getting this. For first one, please note down. Very good. Itansu, very good. Very good, Om. Now the second one is very important, alpha and alpha square, right? One root is alpha, other root is alpha square. Now you have to find a condition, right? Two conditions we know, alpha plus alpha square is equal to minus b by a, and alpha into alpha square is equal to c by a. Now you have to use both this, right? Alpha plus alpha square is equal to minus b by a, and alpha cube is equal to c by a. Now cube both sides, a cube plus b cubed plus 3 alpha is equals to minus b cube by a cube. Alpha cube is c by a. Alpha to the power 6 is a c square by a square. 3 c by a alpha plus अल्फा स्क्वायर इज माइनस बी बाई। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है एंड थोड़ा सा मजेदार भी है, सो प्लीज यहां तक नोट करो, फिर आगे बढ़ूंगा।
Done, everyone? Noted? Now, so now, like further we have to solve. So multiply with a cube, I'm getting a square c plus c square a minus 3abc is equal to minus b cube. Transfer this b cube. A square c plus c square a plus b cube is equal to 3abc. This is the answer what you are getting. One root is alpha, other root is alpha square. Okay. Done. And the last one on this is everything you'll get as a question, right? जो भी अभी तक हमने किया ना यहाँ पर 5 conditions तक जो हमने किए, the sixth one I'm going, right? One root is alpha, other root is alpha to the power n. Then find condition. We know that alpha plus alpha to the power n is equal to minus b by a, and alpha into alpha to the power n is equal to c by a. Try to solve this. Take your time.
Okay, do it fast. Alpha and alpha square, and now in the generalized case, it's going for alpha and alpha to the power n. Right, alpha and alpha to the power n is very, 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 very good. Right. So let's start. Two conditions are given, and from these two, we have to just answer. This is alpha to the power n plus 1 is equal to c by a, or alpha is equal to c by a to the power 1 by n plus 1. Right? Put the value of alpha, we are getting c by a to the power 1 by n plus 1 plus c by a to the power n to the power 1 by n plus 1 is equal to minus b by a, multiplied with a into c by a to the power 1 by n plus c to the power n a to the power n 1 by n plus 1 into a is equals to minus b. Look there, एक छोटा सा मैं फंडामेंटल बताऊं. a into c by a to the power 1 by 3 है मान लो. राइट, दोनों को मल्टीप्लाई करने हैं. व्हाट वी कैन डू, this having the power 1 by 3, इसका power 1 by 3 नहीं है, so we have to create the power 1 by 3. Right, now both having the power 1 by 3, so we can multiply. In the same way, I'm doing this a to the power n c by a whole to the power 1 by n plus this is a to the power n plus 1, power is 1 by n plus 1 there. Right, into c to the power n by a to the power n power 1 by n plus 1 plus b is equal to 0, or a cancel out with a to the power n plus 1, a to the power n c 1 by n plus 1 plus a c to the power n 1 by n plus 1 plus b is equal to 0. Note down carefully. Very good, very good. So these are the condition. ये 6 के 6 condition मैं बताया हूँ. Anyone want to ask anything in these 6 conditions? एक बार please go through this and ask very important direct question you will get for IIT-JEE and mains examination. Right? डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और इसमें से 3 क्वेश्चन तो IIT-JEE में ऑलरेडी पूछे हुए क्वेश्चंस हैं. So please I'll suggest कि go through this.
if you want to ask anything, please ask. Okay? Nothing? Done? What is problem in 5th and 6th? What you want to? Just I'll explain the same thing. What you are not getting, you can ask. Raise your hand. I'll unmute you. Yes. सर फिफ्थ और सिक्स में मुझे फिफ्थ में तो पावर का नहीं समझा और सर सिक्स में मुझे कुछ नहीं समझा आपने कैसे एन का मैंने पावर 3 किया. What is the formula for a plus b the whole cube? ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a प्लस b क्यूब. Or a cube plus b cube plus 3ab a plus b. Is it okay? Yes, sir. Alpha cube is c by a. We are putting the value alpha cube there also, and alpha plus alpha square from there minus b by a. Okay. Okay, sir. Right. The same way we cross multiplied a this side, and this was power 1 by n plus 1. So I have given the example. If you have to multiply a with c by a to the power 1 by 3, so this a will go inside. This will be a cube into c by a to the power 1 by 3. Okay, sir. Okay. Now, सर मुझे वो लास्ट पार्ट नहीं समझा. लास्ट टू लाइंस का. so multiplication a cancel out with a to the power n plus 1. This will be a to the power n into c. This a to the power n cancelling out from this, so this is a c to the power n whole to the power 1 by n plus 1 plus b is equal to 0. सर वो डायरेक्टली जो a रेज टू n c है और उसका बाहर है 1 बाय n प्लस 1. सर उसको नहीं काट सकते, कैंसल आउट कर सकते. मैथमेटिक्स में ऐसा फॉर्मूला नहीं होता बेटा. ओके सर. Graph of parabola. First understand the graph of y is equal to x square. See, if you have to draw the graph of y is equal to x square, this is the graph of y is equal to x square. This is 0, 0. This is known as the vertex. If you are drawing the graph now y is equal to x square, this will give the minimum one, and this is known as the vertex. This line from which we can say कि the parabola or the graph is symmetric, right? जितना positive में जिस तरह से बन रहा है वैसे ही negative में बन रहा है, तो this is symmetric, right? So this is axis of parabola, and this is symmetric, and this is this is known as parabola. Vertex is 0, 0, right? Axis, and this is tangent at vertex. Tangent at vertex. Okay. Note down, please. Okay. In the same graph, if we have to make the graph of y is equals to x minus 1 the whole square. Look into this. For x minus 1 whole square, you have to transfer this to 1 unit.
Now the vertex is at 1, 0, राइट। उसी ग्राफ को आगे शिफ्ट कर दिया क्योंकि x में केवल चेंजेस आ रहे हैं, x -1 है तो 1 यूनिट यू हैव टू शिफ्ट। इफ आई एम सेइंग कि नेक्स्ट इज, ब्लू से रखता हूं, y इज इक्वल टू x प्लस 1 द होल स्क्वायर, सो द ग्राफ विल बी अगेन ऑलमोस्ट द सेम, बट the vertex will be at -1, right, at -1. So this is the vertex and this is known as -1, 0. Is it okay? Right? Y is equal to x minus 1 whole square, y is equal to x square, right? This is the graph of y is equal to x square जो हम लोगों ने ग्राफ बनाया है, let's say, right? ये x minus 1 the whole square है जो हमने ग्रीन वाले बनाए हैं, and this is the graph for x plus 1 the whole square जो हमने ब्लू से बनाया। x में जो चेंज है तो केवल x में चेंज आ रहा है, there isn't any change in y, so there isn't any change in y. But if I am writing y minus 2 is equal to x minus 1 the whole square, right? फिर ये लिखा है, right? Y minus 2 is equal to x minus 1 the whole square, right? So make this, right? Now at x is equal to 1 and y is equal to 2, x is equal to 1 and y is equal to 2 is the vertex, and this will be the parabola, not like this, vertex थोड़ा सा change कर दूंगा, this is the parabola. This will be 1, 2. Vertex will be 1, 2. X is 1, y is 2. Okay? दोनों को एक बार ध्यान से नोट करो. Any confusion or doubt, you have to ask. This is very important topic, so you have to be very careful on this, right? Done. Okay. Now, so if you are clear with this now, so few more questions we are doing. First, y minus 1 is equal to x minus 1 the whole square, right? Second, y plus 1 is equal to x minus 3 the whole square. Draw these two graphs. ये जल्दी से दो ग्राफ ड्रॉ करो तो. Quadratic
क्वाड्रेटिक में अप टू ग्राफ के क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करके रखने हैं. नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस दिस, राइट? दोनों ग्राफ होते जाएं, जल्दी जल्दी लिखते जाना सभी लोग. राइट डाउन फास्ट. राइट, हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग दिस? कितने लोग का सही है? x is equal to 3 and y is -1. Three comma -1. Okay. How many of you are getting both correct? Write down yes in chat, please. Wow, wow, very good, very good, very good, everyone. Draw this. Okay, let's see this. Hope everyone is getting this. X is equal to 2, y is equals to 5. X is equal to 2, y is equal to 5. Parabola is something like this. This is vertex 2, 5, right?
and if it is written in the form of y is equals to ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो वर्टेक्स जो आपने देखा ना वो वर्टेक्स इज माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए पे आएगा, राइट? फर्स्ट थिंग। सेकेंड, अगर a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला अपवर्ड होगा, मतलब ऐसा वाला होगा, राइट? और अगर a लेस देन 0 है तो पैराबोला डाउनवर्ड होगा, मीन्स ऐसा वाला होगा, राइट? एंड थर्ड, x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू c आती है, ये ख्याल रखना। c पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली y एक्सिस के ऊपर कट करेगा, अगर c नेगेटिव है तो y एक्सिस के नीचे कट करेगा। दैट्स इट। ओके, राइट, नोट डाउन। एंड इस पर अब जितने क्वेश्चन आपने किए, अगर फॉर्मेशन में चेंजेस आता है लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, राइट, y is equal to माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनको आप इससे अब ड्रॉ कर सकते हो, राइट? तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके पहले होमवर्क मैंने आप लोगों को बता दिया है, यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क, राइट? नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे उसे। ओके ओके एवरीवन, एनीवन वांट टू आस्क एनीथिंग प्लीज? Bye, गो sir. अहेड Thank you, अनाथ। sir. बाय बेटा, बाय बाय, थैंक यू। Bye, sir. Bye, sir. Thank you, Bye, sir. sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. अच्छे से रिवीजन कर लेना, Bye, दिस इज sir. वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर बेस बहुत सारे क्वेश्चंस होने हैं। ग्राफ के Thank you, sir. पहले ग्राफ तक के ओम पूरे क्वेश्चंस करने हैं क्वाड्रेटिक के एंड बेसिक मैथ्स कंप्लीट मॉड्यूल। थैंक यू। Thank you, sir. Bye, sir. ये जो मैंने लिखा हुआ है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ना, ये अगर इस फॉर्म में रहे क्वाड्रेटिक ना, तो हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ, तो उसके लिए पहला है वर्टेक्स निकालना। तो वर्टेक्स क्या फॉर्मूला मैंने डायरेक्टली आपको दे दिया, माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए। डी का मतलब यहाँ पर होता है डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, राइट? अगर ए ग्रेटर देन 0 रहेगा तो अपवर्ड पैराबोला रहेगा, और ए लेस देन 0 रहेगा तो डाउनवर्ड पैराबोला रहेगा, ठीक है? y की लाइक अगर x की वैल्यू 0 आप पुट करोगे तो यूल गेट y इज इक्वल टू c, राइट? y इज इक्वल टू c ये बताएगा कि c अगर पॉजिटिव है तो y एक्सिस को ग्राफ जो कट कर रहा होगा पॉजिटिव में, नेगेटिव है तो नेगेटिव में, 0 है तो 0 पर। ये ख्याल रखना, ये तीन चीज ख्याल रखते हुए वी कैन ड्रॉ द ग्राफ, राइट? ओके सुमित? Okay. Bye. Thank you. Yes, you want to ask anything?
Yes, is it okay?